So we have written a simple program last time. Can you tell me how do I write a program? कैसे program लिखते थे हम? Public class hello world ऐसे कुछ हमने program लिखा है. We will try to understand this program today in a very layman term. सबका सेटअप हो गया राइट जावा के लिए? Everyone setup is done? Okay. This was the program we have written last time. And everyone knows how to compile this, how to run this. ठीक है, ये हमने कुछ प्रोग्राम देखा था. सो हमारा आज का एजेंडा यही है. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम ओनली. तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम प्रोग्राम लिखते हैं मतलब क्या लिखते हैं? व्हाई डू वी राइट द प्रोग्राम? व्हाट इज अ प्रोग्राम? व्हाट इज अ प्रोग्राम? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म सर्टेन टास्क. कोई ना कोई काम करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस लिखते हो. तो इंस्ट्रक्शंस आर for the completion of the task. For what purpose we have the instructions? Instructions are for the completion of the task, right? Now we have instructions to complete a task. Now that instructions are given to the computer to perform certain tasks. We know that. Now remember, every task, now we'll have hundreds of tasks in an application or a software. Now what is software? Software is nothing but a group of programs. When you have multiple programs, we get a software. तो मल्टीपल प्रोग्राम्स मतलब मल्टीपल टास्क कंप्लीशन की जो इंस्ट्रक्शन उनको सबको मिला के मिल जाता है एक सॉफ्टवेयर. तो कोई भी सॉफ्टवेयर में आप जब डेवलप करते हो लिखते हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा टास्क होंगे. आप इन सारे टास्क को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? हाउ आर यू गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस टास्क? हाउ आर यू गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस टास्क? एवरी टास्क विल हैव सर्टेन नेम. So the task will have the name, yes, and every task will have a set of instructions which are bind together. तो कोई भी टास्क के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे उसको आप बाइंड करके रखोगे. तो दैट इंस्ट्रक्शंस आर फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क. तो आप पहले तो जो भी इंस्ट्रक्शंस रहेगी आप उसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखोगे. एंड दैट इंस्ट्रक्शन लेट्स आपके पास स्टेप 1 होगा. स्टेप 1 इज डू फॉर डूइंग दिस. देन यू विल हैव स्टेप 2, स्टेप 3 लाइक दिस. So we'll have multiple steps. Do this, do this. Now these instructions, now instruction can be small, that can be any number of instructions. Now these particular instructions are for completion of the task. So we'll have a task, which will have a task name for this, right? Now we'll have a task name also. So you'll understand that these instructions are for this particular task. आपको task name भी लिखना पड़ेगा वहां पर. For let's say I have a task of multiplication of two numbers or addition of two numbers. To complete that task, what is the requirement? To perform that task, what is required? वो टास्क कंप्लीट करने के लिए आपको क्या चाहिए? यूजर से कुछ इनपुट एक्सेप्ट करेगा. यूजर से कुछ इनपुट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. तो टू परफॉर्म अ टास्क, to perform a task might accept the input also. So to accept the input, we write like this. So this is where we accept the input. So whatever the input needed by the task will be added like here. So task has a name. Task might accept the input also, and the task set of instruction boundary is this curly braces. So all the instructions you will write inside this particular curly brace. Now after performing the task, let's say multiplication of two numbers, so the task completion will provide or will generate the output also. Will generate the output also. So what type of, so what output your task is going to generate, so that also we have to write here. We call it as return type. We call it as return type or output. You can call it output return type. So what is the type of return? So what output you will generate, so that also you will write here. You will write output also. In short, I will write output. What is the output? Whether it is a number, whether it is a string, or whatever it is. So you have to write output also, then the task name and the input. Now
After completing, by using this input, you will perform these steps. After completing the steps, you will return some output also. ये हो गया आपका एक task. Right? Now this is one of the task. I will write a simple task. Now this is the syntax I have written. कोई भी task complete करने के लिए. अभी लेट्स से मुझे एक task लिखना है कि उसका क्या होगा, addition of two numbers. अभी इस टास्क मेरा एक काम है कि मुझे एडिशन करके देना दो नंबर का. सो आई विल राइट द नेम ऑफ द टास्क इज एडिशन. देन टू परफॉर्म दिस एडिशन आई नीड सम इनपुट आल्सो. So input will be of type, there will be input of two numbers. I will say number 1, number 6. So this will be the input, and then I will write addition number 1 or 2. और ये नंबर कौन से टाइप के हैं, लेट्स से इंटीजर टाइप के. सो आई विल राइट दिस डेटा इज ऑफ टाइप इंटीजर. Then I say do the addition of two numbers. I will say number 1 plus number 2. Addition हो गया और हर एक स्टेप आप सेपरेट करते हो सेमीकोलन. So since this is the output, this is the output we have, so I call it as return. Return means return this value as a output. Now what a type of data you are going to return? This will be integer. So this is a simple example. You don't need to worry about the syntax. What you have to worry about is we have a task, and that task will have a name, and to perform that task we need a, that can be a single input or it may have input. This is a optional input. ये optional है, मतलब कोई भी टास्क ऐसे नहीं कि कंपलसरी सबको इनपुट देना ही देना है, ऐसा नहीं है. तो we have a task which will have a name, which will accept some input, which will return some output, and which will have some set of instructions. So that I write like this. So I write instructions like this. So this is not the exact syntax, but I am telling you the syntax. We will look out this syntax. Don't worry about. अभी के लिए बस समझो कि आप प्रोग्राम लिख रहे हो, मतलब you are trying to write instructions to complete a task. तो कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए उसको जो स्टेप्स रहेंगे आप कहाँ पर लिखोगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर. देन दैट टास्क, व्हाट इज द टास्क. अभी इंस्ट्रक्शन लिखी है तो आपको पता भी होना चाहिए ना ये किस चीज के लिए आपने इंस्ट्रक्शंस लिखी है, इसलिए आप यहाँ पर लिखते हो टास्क नेम. व्हाट यू राइट, वी राइट द टास्क नेम. देन टू परफॉर्म दिस टास्क यू माइट एक्सेप्ट द इनपुट आल्सो. इनपुट भी दे सकता है. लेट्स से एडिशन ऑफ टू नंबर्स. आपको इनपुट क्या चाहिए, दो नंबर चाहिए. लेट्स से आपको क्या करना है, एक नंबर का स्क्वायर करना है, तो आपको इस केस में क्या चाहिए, इनपुट एक नंबर चाहिए. तो यू विल गिव वन इनपुट, and in that input you will perform some operation and you will get the output as let's say square, cube or power of anything, right? Now this is a simple task. This is a simple task. Now ऐसे आपके पास बहुत सारा टास्क हो सकते हैं. You can have any number of tasks, right? You can have multiple tasks. Let's say addition के लिए आपने टास्क लिखा, वैसे ही आपने subtraction के लिए भी आप टास्क लिख सकते हो. Subtraction के लिए भी सेम टास्क, उसका नाम होगा, result होगा, it will accept the input also, int number 1, int number 2, और आप रिटर्न करोगे number 1 minus number 2. ये आपका दूसरा टास्क हो गया. Similarly we'll have multiplication also, multiply. This will be instead of this you will write. Similarly you will have division also. The divide is the, then you will write this number 1 by number 2. ऐसे मल्टीपल टास्क हो सकता है, राइट? आप मुझे बताओ, आपका लेट से एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर, इंटरनेट बैंकिंग जैसे सॉफ्टवेयर है आपके पास, तो सारा कोड एक ही फाइल में लिखोगे क्या आप? आर यू गोइंग टू राइट एंटायर कोड इन वन ओनली वन फाइल? नो. एक ही फाइल में क्यों नहीं लिखेंगे हम सारा कोड और सारा इंस्ट्रक्शन हम एक ही फाइल में क्यों नहीं लिखेंगे? व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू राइट दैट? कैन एनीवन टेल मी? बोलो. परफेक्ट. और क्या हो सकता है? अभी लेट से आपके पास फोटोज है, आप एक ही फोल्डर में लगते हो क्या सारे फोटोज?
नहीं, आप लेट्स से आप फोटोज है आपकी, कोई ट्रिप पे जाते हो आप, बहुत सारे ट्रिप पे जाते हो, तो सारे फोटोज आप एक ही फोल्डर में रखते हो क्या? फिर उसे अलग अलग रखते हो, क्यों अलग अलग रखते हो? तो यू शुड अंडरस्टैंड कि दिस फोटोज बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर ग्रुप, राइट? So what you do, you divide your photos into different folders or groups based on your मतलब लोकेशन हो सकता है, या बेस्ड ऑन कोई इवेंट हो सकता है, तो इसके बेसिस पे आपके मतलब लॉजिकली ग्रुप करते हो आप फोटोज। तो वैसे ही आपके पास हजारों टास्क रहेंगे, आपके पास हजारों टास्क रहेंगे, तो आप क्या करोगे फिर? एक साथ लिखोगे सारे टास्क? नो। What you will do, you will logically group the task. So you will write related group of tasks with with together. We will write related group of tasks together. क्या करोगे आप? जो भी related task है उनको एक साथ लिखोगे आप, right? So we'll try to understand that concept also. So what we are doing, we are doing the categorization or grouping or classification of your task. क्या कर रहे हैं हम? Categorization or classification or grouping of your task. क्या कर रहे हैं हम? आपके टास्क को ग्रुप कर रहे हैं। We are trying to create a group or we are trying to create a category of tasks. We are trying to create a classification of tasks. आप क्या करते हो? आपके जो भी टास्क होंगे, so you will have let's say task 1. So task 1 we have body also. Similarly we will have multiple tasks. तो टास्क नेम शुड बी यूनिक। टास्क नेम आपको अलग अलग लिखना हो, ऐसे कंपलसरी नहीं है, बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड वी हैव मल्टीपल टास्क। नाउ दीज टास्क आर रिलेटेड, नाउ दीज टास्क आर रिलेटेड, दीज टास्क आर रिलेटेड। तो मैं क्या करता हूँ, इन सारे टास्क को एक साथ लिखता हूँ। सो आई विल राइट देम करली ब्रेसेस। व्हाट आई डू, आई राइट ऑल द रिलेटेड टास्क टुगेदर। आई डू, आई राइट ऑल द रिलेटेड टास्क टुगेदर। तो उन्हें लिखता हूँ एक और करली ब्रेसेस के अंदर। क्या क्या मैंने अभी, आई हैव जस्ट क्रिएटेड अ group of task. What I created, I have created a group of task. So all these tasks are of similar type or they are logically related, they are logically related. अभी ये ग्रुप हो गया ना। now what is this outer curly braces, what is this? This is a group of task. so that curly braces contains group of task. क्या कंटेंट होता है उसके अंदर? ग्रुप ऑफ टास्क। तो उस ग्रुप को हम कुछ नाम देते हैं। so I will write टास्क ग्रुप, या कुछ भी नाम दे सकते हो। यू कैन राइट एनी ग्रुप नेम और अ टास्क ग्रुप। तो अभी ये आपको बोलना है कि दिस इज अ ग्रुप। नाउ व्हाट इज दिस? बाय लुकिंग एट यू विल नॉट अंडरस्टैंड ये क्या है, ये क्या है। आपको वैसे देख के पता नहीं चलेगा कि व्हाट इज दिस, इज अ ग्रुप ऑफ टास्क और व्हाट, राइट? नाउ तो टू से दैट दिस इज अ ग्रुप ऑफ टास्क, तो क्या बोलना है कि दिस इज अ ग्रुप ऑफ टास्क। तो बिफोर दैट यू राइट अ वर्ड कॉल्ड एज क्लास। So what this class word means? This class word means followed by whatever you see. This is a group of task. This is a group of related task. This is a group of related task. This is a category of related task. This is a classification of related task. आप कैसे लिखते हो कोड? देखो यहाँ पर। तो हमेशा याद रखना, जो भी जाओ में कोड लिखोगे, सो दैट कोड विल बी पार्ट ऑफ वन ऑफ द टास्क और द कोड विल बी पार्ट ऑफ वन ऑफ द ग्रुप और अ क्लास। आप इसे क्लास नेम भी बोलते हो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लास नेम और अ ग्रुप नेम। तो आपका हमेशा याद रखना, जो भी कोड लिखोगे आप जावा में, क्लास के अंदर लिखोगे या ग्रुप के अंदर। तो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा आपका? पहले लॉजिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट गो इनटू टेक्निकल्स। अभी आप क्या लिखोगे? पहले पहले तो आप, हाँ मतलब क्लास ही लिखोगे, लिखा अभी कोड लिखा आपने कोई टास्क के लिए। तो दिस टास्क, कैन यू राइट इंडिपेंडेंट टास्क ऐसे कहीं पर भी? नो। दिस इज वन टास्क, यू राइट अनदर टास्क। यू कैनॉट राइट इंडिपेंडेंट टास्क इन द फाइल, मतलब ऐसे आप टास्क इंडिपेंडेंटली लिख नहीं सकते डायरेक्टली। तो दिस टास्क यू हैव टू राइट इनसाइड अ क्लास ओनली और अ कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ पर आपको लिखोगे आप क्लास और इसे कुछ नाम दोगे, लेट से कोई ग्रुप होगा। तो एक क्लास के अंदर ही आप बाकी टास्क लिखोगे। क्या करोगे आप? एक ग्रुप के अंदर ही आप, एक ग्रुप के अंदर ही आप टास्क लिखोगे और टास्क के अंदर आप स्टेप्स लिखोगे। कैसे लिखोगे आप? आपका
आपका बड़ा एक ग्रुप होगा, ग्रुप के अंदर आपका क्या होगा, टास्क, और टास्क के अंदर क्या होंगे, स्टेप्स. वी हैव ग्रुप, अंडर दैट वी हैव टास्क, अंडर टास्क वी हैव स्टेप्स. राइट. ऐसे आपके पास मल्टीपल ग्रुप्स हो सकते हैं. यू कैन हैव मल्टीपल ग्रुप्स, कैन हैव मल्टीपल ग्रुप्स. So we can have multiple groups of task, multiple groups of task, right? अभी आप मुझे बताओ सिंपल, लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं. अभी we'll talk about, we'll not go into the program itself, I am just telling you the structure कैसे करते हैं हम. अभी एक हम एप्लीकेशन लेते हैं. अभी आपको एक सिंपल एप्लीकेशन ट्राई टू अंडरस्टैंड. अभी आपने कैश बुक नाम सुना होगा, राइट? कैश बुक ऐप सुना है किसी ने? कैश बुक ऐप क्या करता है ये एप्लीकेशन? अभी यहाँ पर तो सिंपल एंट्री होती है, आपका इनकम और एक्सपेंस. क्या होता है? दो एक्सपेंस. यहाँ पे दो एंट्री करते हो आप, इनकम एंड एक्सपेंस. अभी आप इनकम ऐड कर सकते हो, राइट? क्या कर सकते हो आप? लेट्स से कोई इनकम है, तो इनकम के साथ क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हो आप? ऐड करना. अभी लेट्स से आपने कोई गलती से ऐड कर दिया, उसे एडिट करना है. लेट्स से आपने एक्सपेंस का डेट गलत डाल दिया. इनकम, जो भी इनकम था, लेट्स से आपने इनकम ऐड कर दिया लेकिन कुछ गलत नंबर एंटर कर दिया वहाँ पर इनकम के लिए, या डेट कुछ गलत डाल दिया कि मेरा डेट, लेट्स से मेरा कुछ एक इनकम आया था, वो गलत डेट डाल दिया आपने, उसको एडिट करना हो सकता है. दूसरा, आपने आपको वो अभी एक्सपेंस या इनकम नहीं चाहिए, यू विल डिलीट दैट. ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं. सिमिलरली एक्सपेंस भी आप ऐड कर सकते हो, उसे एडिट भी कर सकते हो, वैसे डिलीट भी कर सकते हो. तो ऐसी एक्सपेंस रिलेटेड जो भी ऐसी बहुत सारी टास्क हो सकती है, राइट? सिमिलरली इनकम के लिए भी बहुत सारी ऐसी टास्क हो सकती है, ऐड, एडिट, डिलीट, रिपोर्ट जनरेट करना, यूजर को मेल भेजना, और भी बहुत कुछ हो सकती है इनकम रिलेटेड, राइट? जैसे कुछ आप एंट्री करते हो, कुछ आपका लॉग होना चाहिए, कुछ भी कर सकते हो. तो इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वी हैव मल्टीपल टास्क. what task we have add a income in the system, edit the task, edit the income, delete the income, add the income, edit the expense, delete the expense. ये बहुत सारे हो सकते हैं. अभी आप मुझे बताओ, लेट से ऐड इनकम करने के लिए आपको लेट से 1000 लाइन लिखने पड़ते हैं, 100 लाइन्स लिखने पड़ते हैं. सिमिलरली एडिट के लिए आपके पास 200 लाइन लगते हैं. लेट से डिलीट के लिए आपके पास 100 लाइन्स का कोड लिखना पड़ेगा. तो आप सारा एक साथ लिखोगे या अलग अलग टास्क में लिखोगे? अलग अलग टास्क रहेंगे आपके, राइट? सो विल ट्राई टू डेवलप अ सिस्टम. अभी मुझे क्या करना है, मेरे पास कितने टास्क है? आई विल हैव 6 टास्क. आई विल हैव 6 टास्क, बट आई विल राइट 3 टास्क इनसाइड वन ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज इनकम, एंड आई विल राइट 3 टास्क इनसाइड द expense. तो पहले आपको क्या करना है? ग्रुप क्रिएट करना है. सो हाउ डू वी क्रिएट अ ग्रुप? वी राइट द कीवर्ड कॉल्ड एज क्लास, और उसे क्या नाम, जो भी नाम देना है. लेट्स से इनकम रिलेटेड जो भी टास्क है, आई विल राइट इनसाइड दिस पर्टिकुलर ग्रुप. सो क्लास इज नथिंग बट अ ग्रुप. So this is a group of income related tasks. I write like this. This is the first structure. This is required. Then what you write? I will write the add income is the task name. You will have this body also. You will have written also something. But for now, this method does not write anything. I will say void. Similarly, I will have some steps here. Then I will have edit income. फिर मेरे पास और भी हो सकता है डिलीट इनकम. ये हो गया आपका इनकम रिलेटेड सारी आपकी टास्क. ऐसी बहुत सारी भी टास्क हो सकती है, लेकिन आपने क्या किया? पहले तो ग्रुप क्रिएट किया किसका? इनकम रिलेटेड, तो उसको नाम दे दिया इनकम. सो व्हाई व्हाई वी हैव टू राइट दिस क्लास? क्लास ये लिखने से क्या पता चलता है कि दिस इज अ ग्रुप. दिस इज अ ग्रुप विच कंटेन्स रिलेटेड टास्क. दिस इज अ ग्रुप विच कंटेन्स रिलेटेड टास्क. नाउ दीज आर द टास्क. These are the tasks. So task will be part of a class. Task
अभी टास्क को बहुत सारे नाम से वी विल टॉक अबाउट दैट. फॉर नाउ जस्ट टास्क इज written inside the class. Where do we write the task? Written inside the class. ठीक. Similarly, I will create another class. So it is recommended that you create different classes, different files. मतलब जो भी ग्रुप्स रहेंगे अलग अलग फाइल्स में अलग अलग, जिससे क्या होगा, मेंटेनेंस इजी रहेगा. अब जैसे ट्रिपलेटेड फोटोज मैंने आपको बोला था अलग अलग फोल्डर्स में लिखते हो, उससे आपको एक्सेस करना ऑर्गेनाइज करना इजी होता है. तो वैसे ही रिलेटेड टास्क आप एक क्लास में लिखो और एक फाइल के अंदर एक क्लास लिखो, दूसरे फाइल में दूसरा क्लास और दूसरे फाइल में दूसरा क्लास, उस क्लास के अंदर दूसरे टास्क. अब यहाँ पर मैं सिंपली फिर से एक बार ये सारी जस्ट कॉपी दैट एंड आई विल जस्ट पेस्ट हियर आल्सो. इनकम की जगह पे आपको लिखना है यहाँ पर एड एक्सपेंस, एडिट एक्सपेंस, डिलीट एक्सपेंस. ये सारी आपकी अलग अलग स्टेप्स होगी. So we have a group, inside the group we have task, and inside the task we have. ये क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? So why do we write programs? We write program to complete the task. Now we have multiple tasks. We have multiple tasks. Where do we write this task? We write this task inside the. And what is a class? Class is nothing but a group or a classification or a categorization of related task. Task and data होते हैं, लेकिन अभी के लिए बस task. यहाँ तक क्लियर है? अभी आपके एप्लीकेशन में कितने प्रोग्राम्स रहेंगे? मिनिमम मिनिमम एक हो सकता है, मिनिमम एक तो प्रोग्राम होगा. और आपके एप्लीकेशन में मिनिमम कितने टास्क होने चाहिए? मिनिमम कितने टास्क होंगे आपके एप्लीकेशन में? एटलीस्ट एक तो होगा. आपका एप्लीकेशन कुछ काम ही नहीं कर रहा है, कोई टास्क ही परफॉर्म नहीं करना, तो दैट इज नॉट एप्लीकेशन. आपने कुछ ना कुछ तो कोड लिखोगे. यू राइट सम इंस्ट्रक्शंस, यू राइट सम स्टेप्स टू कंप्लीट एटलीस्ट वन टास्क, राइट? तो आपके पास लेट से हजारों टास्क है. you'll have thousands of classes, thousands of task will have inside that. तो इन सारे टास्क में से सबसे पहला कौन सा टास्क एग्जीक्यूट होगा या कंप्लीट कौन सा टास्क होगा? इनमें से सबसे पहले कौन सा टास्क कंप्लीट होगा? विच टास्क विल बी कंप्लीटेड फर्स्ट? विच टास्क विल बी कंप्लीटेड फर्स्ट? हु इज गोइंग टू टेल दैट? हु इज गोइंग टू टेल दैट विच टास्क टू कंप्लीट फर्स्ट? Now you are the one who are instructing the computer. You are saying that these are the list of tasks I have. अभी आपके पास कितने टास्क है? अभी ये तीन और ये तीन, टोटल कितने? 6 टास्क है. तो आप ये लिस्ट किसको दे रहे हो? कंप्यूटर को. तो कंप्यूटर को भी आप ही बोलोगे इसमें से पहला टास्क कौन सा कंप्लीट होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा. हु इज गोइंग टू टेल दैट? यू आर द वन. प्रोग्रामर इज गोइंग टू टेल टू द कंप्यूटर दैट दिस द सीक्वेंस ऑफ योर कंप्लीटिंग द टास्क. ये कौन बताएगा? आप ही बताओगे. यू आर द वन हु आर गोइंग टू. यहाँ तक क्लियर है सब? नाउ अभी देखो, अभी जावा ये आपका प्रोग्राम कौन रन करने वाला है? हु इज गोइंग टू रन योर प्रोग्राम और हु इज गोइंग टू रन दिस क्लास? हमने दो सॉफ्टवेयर देखे थे. कौन से सॉफ्टवेयर? जावा कंपाइलर क्या करता है, आपने जो कोड लिखा है वो सही है गलत है वो देखेगा. इट इज गोइंग टू चेक वेदर द कोड इज करेक्ट और नॉट. दैट इज जॉब कंपाइलेशन, चेकिंग, जस्ट अ चेकिंग. बट कोड कोड एग्जीक्यूट करना मतलब आपका टास्क के अंदर जो स्टेप्स है उसे कंप्लीट करना. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? व्हाट आर द स्टेप्स आर देयर इनसाइड योर टास्क? कंप्लीटिंग दैट टास्क स्टेप्स इज नथिंग बट एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, राइट? तो इनमें से सबसे पहला कौन सा टास्क एग्जीक्यूट? आपने दो कमांड देखी थी, जावा सी फाइल नेम दिया था और उसके बाद एक कमांड दी थी. क्या कमांड दी थी आपने? जावा जावा सी और फाइल नेम दिया था. उसके बाद दूसरी क्या थी कमांड? जावा और क्लास. आपने क्या लिखा था? जावा और क्लास नेम. दो कमांड्स लिखी थी आपने. कमांड थी, पहली कमांड थी जावा सी और फाइल नेम दिया था, फाइल नेम डॉट. ये कंपाइलेशन होता है. व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज कंपाइलेशन. यहाँ पर क्या आपकी एरर्स मिस्टेक्स फाइंड की, मिस्टेक्स फाइंडिंग नहीं है तो आगे भेजो. दूसरी कमांड थी आपकी जावा और यहाँ पर आपने लिखा था क्लास नेम. इसे बोलते हैं एग्जीक्यूशन. और यहाँ पर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है?
JRE। और यहाँ पर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा था? जावा कंपाइलर। ठीक। अभी JRE क्या करेगा? तो JRE को आपने बोला है बॉस यूज दिस क्लास। ये कमांड किसे हुए? दिस कमांड इज नथिंग बट गिवन टू द JRE। सो दिस JRE इज सेइंग, so what you are saying, JRE use this class and execute the task inside the class or this particular group। ये कमांड आपने दिया। ये कमांड का मतलब क्या होता है? JRE boss, this is the class name or the group name, in this particular group execute the task। Now in this particular group you will have multiple classes, multiple tasks। in this group in this group you will have multiple tasks। उसमें से कौन सा टास्क एग्जीक्यूट करना है ये कैसे पता चलेगा उसे? आपने क्या बोला है? JRE whatever the class name it is, that is nothing but a group of task, उसे एग्जीक्यूट करो। उसे एग्जीक्यूट करो मतलब होता है, क्या मतलब होता है उसका? रन करो। बट लेकिन उसमें से कौन सा टास्क आप कंप्लीट करोगे? जो ऑर्डर में लिखे वो आपको बोलना पड़ेगा। इनमें से कौन सा टास्क पहले एग्जीक्यूट करना है? विच ऑल टास्क यू वांट टू एग्जीक्यूट, ये कैसे बताओगे आप? तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल द JRE और द जावा दैट और द मशीन दैट एग्जीक्यूट दिस टास्क फर्स्ट, एग्जीक्यूट दिस टास्क फर्स्ट। यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? मैं आपको वहां तक लेके जाने की ट्राई कर रहा हूँ। जो कोड हमने लिखा है डे 1 पे उसके तो पहुंचने की ट्राई कर रहे हैं। दिस इज नथिंग डिफरेंट, वी आर ट्राइंग टू गेट इनटू द लॉजिक और द कोड वी हैव रिटन ऑन दी दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। ठीक। अभी यहाँ पर आपने लिखा है कि एग्जीक्यूट और कंप्लीट द टास्क विच आर इनसाइड द क्लास नेम। क्लास नेम यानी कि ग्रुप ऑफ टास्क। अभी जावा क्या करता है या JRE आपको कंपलसरी करता है कि आपका अगर आप आपका टास्क का कंप्लीशन करना चाहते हो तो आप एक सिंटैक्स लिखो। तो वो क्या करेगा? ही विल लुक आउट फॉर अ पर्टिकुलर सिंटैक्स। उस पर्टिकुलर एरिया में आपको लिखना पड़ता है कि कौन सा टास्क एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट दिस टास्क, एग्जीक्यूट दिस टास्क या एग्जीक्यूट, ये आपको बोलना पड़ेगा। तो वहां पर एक स्पेशल आप मेथड लिखते हो, दैट इज सम काइंड ऑफ अ मेन थिंग यू हैव। तो यू हैव समथिंग मेन थिंग विच इज व्हाट वी हैव टू राइट देयर। तो हमने लिखा था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। क्या लिखा था हमने? हमने एक लिखा था पब्लिक स्टैटिक वॉइड। तो जावा बोलता है कि आप एक टास्क लिखो। जावा क्या बोलता है? यू राइट अ टास्क whose name is main and which will accept a string of r। स्ट्रिंग आर का मतलब होता है मल्टीपल स्ट्रिंग्स। ये टास्क क्या कर सकता है? मल्टीपल स्ट्रिंग्स एज अ इनपुट एक्सेप्ट कर सकता है। now this will have a body curly braces and this is not going to return any void मतलब nothing। this task will not return any output। void का मतलब क्या होता है? this particular main task is not going to return any output। क्या आपने लिखा है? void। void और उसके बाद हमने दो वर्ड लिखे थे और पब्लिक स्टैटिक, विल टॉक अबाउट दिस आल्सो। पब्लिक एंड स्टैटिक क्या होता है? विल टॉक अबाउट दैट। फॉर नाउ जावा इज सेइंग दैट यू शुड डिफाइन वन टास्क नेम इज whose name is main and the syntax of that particular task should be like this। syntax of that particular task should be like this। राइट। अभी आप जब लिखते हो तो ये लिखना क्यों कंपलसरी? व्हाई दिस इज कंपलसरी? दिस इज नॉट कंपलसरी एवरीवेयर, दिस इज हाउ टू राइट इन योर एंटायर एप्लीकेशन ओनली वंस। ये कहां पर लिखना है आपको? आपके एप्लीकेशन में कोई भी एक क्लास में आपको ये लिखना और वहां पर आपको लिखना है कि बाकी जो भी आपने टास्क लिखे। सो व्हाट इज द जॉब ऑफ दिस पर्टिकुलर टास्क? द जॉब ऑफ दिस पर्टिकुलर टास्क इज टू कंप्लीट अदर टास्क। और यहाँ पर आप लिखोगे इसमें से क्या पहला कौन सा टास्क कंप्लीट होना चाहिए। सो यू से कंप्लीट फर्स्ट ऐड एक्सपेंस, देन यू कैन एडिट। मतलब आप यहाँ पर सीक्वेंस बताओगे और जो भी आप यहाँ पर बताओगे वही एग्जीक्यूट। एडिट एक्सपेंस देन डिलीट एक्सपेंस, तो यही ऑर्डर फॉलो होगा। राइट। चलो फिर से एक बार। नाउ वी हैव मल्टीपल टास्क टू कंप्लीट। नाउ देन यू हैव गिवन कमांड। तो आपने किसे कमांड दिया? JRE को। So you are saying JRE use this class name and complete the task inside this class name। अब ये क्लास नेम पर आएगा और वो वहां पर क्या ढूंढेगा?
So JRE will look out what is the first thing inside this particular class. तो JRE इस पर्टिकुलर क्लास में ढूंढेगा क्या, मेन टास्क। क्या ढूंढेगा वो, मेन टास्क। ऐसा टास्क ढूंढेगा जिसका नाम है मेन, मतलब इन शॉर्ट ही विल लुक आउट फॉर द टास्क विद दिस पर्टिकुलर सिग्नेचर। ऐसा मैचिंग सिग्नेचर है उस पर्टिकुलर टास्क में जाएगा और वहां पर देखेगा कि हाँ, हैव टू कंप्लीट ऐड एक्सपेंस फर्स्ट, एडिट एक्सपेंस देन एंड देन, ये आपको करना है। तो दिस इज द जॉब ऑफ योर मेन टास्क। क्लियर है? So what is the need of this particular in task? What is the need of this particular task? If you do not write, what happens? If you do not have that task, will not be able to complete any of the tasks. मतलब ये टास्क आपको जरूरी है। क्यों जरूरी है? बाकी टास्क कंप्लीट करने के लिए। अभी टास्क आप कहीं पर भी लिख सकते हो, दूसरे क्लास में भी लिख सकते हो। मतलब आपने लेट से 10 क्लासेस बनाए हुए, 10 क्लासेस में आपने अलग अलग टास्क बनाए, तो उन सारे टास्क को कंप्लीट करना है तो आप जगह पर कोई भी क्लास में या कोई भी फाइल में आपको एक जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, मेन टास्क। उसका काम क्या है, जो भी आपने टास्क लिखे हैं पूरे उन सबको सीक्वेंस देना, कौन सा टास्क पहले एग्जीक्यूट करना है, ये दो तीन जो भी है ये आपको पड़ेगा। So that we write inside the main task. So main task is also called as entry point for your Java application. So this is the entry point for your Java application. And who is going to call that particular task or who is going to complete that task? JRE will first of all call that particular task. What is the name of the first task that will be executed? Main task. और मेन टास्क तक आएगा, उसका काम क्या है, बाकी टास्क को कंप्लीट करना। व्हाट इज जॉब ऑफ मेन टास्क? कंप्लीट अदर टास्क। वहां पर आप सीक्वेंस लिखते हो, यू राइट द सीक्वेंस कि कौन सा टास्क कंप्लीट हो। क्लियर है? लॉजिकली थोड़ा समझ में आ रहा है आपको पिक्चर पूरा? राइट, यू डोंट वरी अबाउट द सिंटैक्स। सिंटैक्स हम सीखेंगे, वर्ड्स का मीनिंग अभी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, राइट अवे जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल पिक्चर। ठीक है? हम प्रोग्राम लिखते हैं मतलब क्या करते हैं, वी राइट, ट्राई टू राइट द इंस्ट्रक्शंस टू कंप्लीट अ टास्क। तो हर एक टास्क को क्या नाम होगा, कुछ टास्क कंप्लीट करने के स्टेप्स होंगे, हम उसे लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और फिर उस कर्ली ब्रेस के अंदर आप स्टेप्स लिखो। एवरी टास्क विल हैव अ नेम, एवरी टास्क विल एक्सेप्ट सम इनपुट, इट मे एक्सेप्ट और इट मे नॉट, और एवरी टास्क विल रिटर्न सम आउटपुट आल्सो आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क। अगर रिटर्न नहीं करना है, नहीं करता है, तो आपको लिखना पड़ेगा वॉइड। वॉइड का मतलब होता है दिस पर्टिकुलर टास्क डज नॉट रिटर्न इन आउटपुट आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टेप्स। ठीक है? तो क्लियर है? व्हाट इज क्लास? The kind of a class is a keyword. It is a keyword using which what we can do, we can create a group. What is that class? Using that we are creating a group, and that group contains a related task. That group contains a related task. है तो clear है? चलो, now I will write one second program. I will write all this. Now I will create particular class. Now I will write a system. Now there is line I am writing which is printing something on the, I will write something add income. Similarly, I will write it income. इसे मैं थोड़ा static बना देता हूँ. I will just static. Don't worry what is static. For now, just understand this is I will save this file. I will save this file. Control S. I will write the class name as file name as income, and all files. I will say dot. I have written the file. I will save this. Now what we have to do? We have to go to the folder. We have to go to the folder where file is saved. Go to that particular folder where files are. Under that, I have this file called as. So this is the file income. I will just click on here and I will type. MD will open a command.
There I write the command to compile the file javac income dot. So if there is any error, this will show me. Now there is no error because we have written exactly what the syntax is. Once you compile that successfully, you get a dot class file as the output. What you get output as of after compilation, you get a dot class, right? What is the next step? जावा और आप लिखते हो यहाँ पर class name. This is not file name, this is the class name. So we have written a class. We have written a class. What is the class? इसका मतलब होता है इस क्लास के अंदर जो भी टास्क है एग्जीक्यूट, लेकिन यहाँ पर वो ढूंढेगा। अभी देखो मैं इसे रन कर रहा हूँ, तो ही सेइंग व्हाट इट इज सेइंग, main method not found in the class income, please define main method as public static void main args. मेथड मतलब टास्क। टास्क को बहुत सारे नाम से, मेथड, प्रोसीजर, फंक्शन, रूटीन, बिहेवियर, इम्प्लीमेंटेशन, सबका मतलब एक ही है कि टास्क। लेट्स से मेथड, वी विल कॉल इट एज मेथड। तो यहाँ पर इसने एरर दिया कि आपके क्लास में मुझे मेन मेथड नहीं मिला, मेन टास्क नहीं मिला। आई डिड नॉट गेट दी मेन टास्क, आई डिड नॉट गेट दी मेन टास्क। ठीक है, अभी उसको मेन टास्क क्यों जरूरी है? व्हाट इज व्हाई वी आर गेटिंग दिस एरर? एरर क्यों दिया उसने? अरे उसको कंफ्यूजन है अभी, ही डू नॉट नो विच टास्क टू कंप्लीट। डज ही नो विच टास्क टू कंप्लीट? आपने सीधे साधे तो बोल दिया कि इस ग्रुप के अंदर जो भी टास्क है उसको कंप्लीट करो, लेकिन उसको नहीं पता ना ऑर्डर क्या रहेगा। तो यू हैव टू टेल हिम दैट बॉस दिस इज द ऑर्डर, दैट यू हैव टू एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर टास्क फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लाइक दिस। ये आप कहाँ पर लिखोगे? तो you want to tell the Java that this is the first task you want to execute, this is the second and third, आपको बोलना पड़ेगा। तो वहां पर उसने बोला है कि what we have to write, what we have to write, उन्होंने बोला है see here, यहाँ पर पढ़ो इसे थोड़ा, read this। it is a error। क्या करना है आपको यहाँ पर? you have to define the main method or main task, why? because this is the entry point for your Java application। यहाँ से आपका बाकी टास्क कंप्लीशन का काम चालू होगा। सो यू हैव टू कंपल्सरी राइट द मेन टास्क इन योर एप्लीकेशन। आप कहीं पर भी लिख सकते हो। आई एम राइटिंग लेट्स से पब्लिक स्टैटिक void main, I write string args, the body of your main task। There you can write which task you want to execute। I will say execute income task first, and after that uh, execute delete task, is delete income। then I want to एडिट करते हैं, वी विल एडिट दैट, एडिट इनकम। आप सीक्वेंस आपके हिसाब से लगा सकते, अप टू यू। तो हैव आई हैव टू सेव दिस फाइल वंस अगेन, और फिर से हमें इसे देखो। अब यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर रन करूँ, बोल रहा है कि मेन मेथड नहीं मिले, लेकिन आपने तो लिखा है ना मेन मेथड, आपने सेव भी किया अभी फाइल, आपने फाइल डॉट जावा फाइल आपका अपडेट हो गया, लेकिन डॉट क्लास फाइल अपडेटेड क्या अभी भी? आपका डॉट क्लास फाइल कब अपडेटेड है, कब अपडेट हुआ है? 35। और आपका डॉट जावा फाइल कब अपडेट हुआ है? अभी 39। आपका डॉट जावा फाइल अपडेट हुआ है, डॉट क्लास, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपका डॉट क्लास फाइल अपडेट होना चाहिए। तो कैसे अपडेट होगा वो? आपको करना पड़ेगा उसे कंपाइल। जब भी आप सोर्स में चेंज करते हो, सेम चेंजेस शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द डॉट क्लास। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कंपाइल इसे। अभी इसे रन करो जावा। तो इसका मतलब होता है जावा और क्लास नेम, इसका मतलब होता है इन दिस पर्टिकुलर क्लास
in this particular class execute the main or execute the main task. What is the first task that is getting executed? The main. So main is doing add, edit, and delete. The job of main task is to complete other task. What is the job of main task? Complete other task. So in your Java application, entire Java application, you have to write at least one main method. एक आपको लिखना पड़ेगा जहां से आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा. दैट इज द काइंड ऑफ एग्जीक्यूशन. क्लियर है यहाँ तक? चलो, I want to understand the things what we have learned so far. Online, anyone want to just summarize? अभी तक मैंने लास्ट 40-45 मिनट्स जो भी बात किया, so I can take it ahead. Yes, online. मैंने डाउट नहीं पूछा, मैं पूछा हूँ कि कैन एनीवन समराइज दिस. तब कोई बता सकता है कि मैंने लास्ट 45 मिनट्स में क्या बात किया? आरती और संकल्पिका. लास्ट 45 मिनट्स में मैंने क्या डिस्कस किया? आई विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. एनीवन ऑनलाइन? आथर, ललित. व्हाट वी हैव डिस्कस्ड? हाँ, बोलो बोलो. व्हाट एल्स? स्वप्निल, कैन यू टेल अस? अदनान, कैन यू? हम्म. हम्म. मेन नहीं होगा तो आपको एप्लीकेशन. मेन इज काइंड ऑफ अ स्टार्ट, is kind of a key to your application. This is something important to start your application. To start your application, what is the key? You should have the main. That is the entry point for your Java application. वहां से आपका execution, right? Okay, let's try to understand the first program. I will just open the ID because this is what तो आपको बस मैं स्ट्रक्चर समझाता हूँ अभी each keyword का. देखो यहाँ पर अभी आप कीवर्ड देख रहे हो. सेम, आई एम कमिंग बैक टू द सेम वर्ड प्रोग्राम. यहाँ पर वर्ड लिखा है पब्लिक. पब्लिक, उसके बाद लिखा है क्लास, हेलो वर्ल्ड. अब ये जब भी मैं वर्ड यूज करूँ ना, रिजर्व्ड वर्ड या कीवर्ड, रिजर्व्ड वर्ड या कीवर्ड, इसका मतलब होता है कि इसको पहले से मीनिंग दिया है. मीनिंग दिया है मतलब लेट्स से आपने एडिशन ऑफ टू नंबर्स करना, तो आप प्लस ऑपरेटर यूज करते हो. 10+20. प्लस ऑपरेटर का क्या काम है आपको ये ऑलरेडी पता है. 20 - 10 आप करते हो, माइनस का काम ऑलरेडी आपको पता है कि ये सब्सट्रैक्शन करने वाला है. 20 × 10 आपको मल्टीप्लीकेशन का ऑलरेडी उसको मीनिंग दिया है. तो वैसे ही ये रिजर्व्ड वर्ड्स है, कीवर्ड्स है.
इनको पहले से ही कुछ ना कुछ मीनिंग दिया है, सो दे हैव प्री डिफाइंड मीनिंग, so they are used for a purpose, they are used for a purpose, if you use that it will help you. जैसे आप प्लस ऑपरेटर का यूज करके एडिशन करते हो, माइनस का यूज करके आप सब्सट्रैक्शन करते हो, वैसे ही पब्लिक, क्लास, स्टैटिक, void, there are a lot of others, there are 53 keywords like this in Java which are useful to write the program. इनको कुछ ना कुछ पहले से ही प्रीडिफाइंड मीनिंग दिया होता है। इसका यूज करके क्या फायदा है आपका, इसका बहुत सारा अलग अलग, यू हैव मल्टीपल यूजेस ऑफ दिस। प्लस का ऑपरेटर का यूज कर आप एडिशन करते हो, वैसे माइनस का सब्सट्रैक्शन, तो वैसे ही ऐसे पब्लिक का भी कुछ ना, तो पब्लिक का ऐसा क्या यूज है, अगर आप पब्लिक यूज करते तो क्या होता है, तो व्हाट हैपेंस पब्लिक, सो पब्लिक का मतलब होता है कि ये ग्रुप जो आपने लिखा है, दिस पर्टिकुलर ग्रुप। अब आप मुझे बताओ, आपके पास आपके एप्लीकेशन में बहुत सारे क्लासेस होंगे, right, and they are going to reuse each other, they are going to use the, let's say कोई एक बड़ा टास्क कंप्लीट करना है, तो आप क्या करते हो, उस टास्क को ब्रेक करते हो मल्टीपल छोटे छोटे टास्क में, और आप क्या करते हो, सारे, अभी लेट्स से कोई कार बनाते हो, आप क्या करते हो, आप छोटे छोटे पार्ट्स पहले बनाते हो, फिर उसे क्या करते हो, असेंबल करते हो, वैसे ही आप क्या करते हो, छोटे 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 टास्क बनाओगे, और उन टास्क को आप एक जगह पर असेंबल, तब एक बड़ा टास्क बनाने के लिए आप क्या करोगे, छोटे 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 टास्क करोगे, राइट, और उन सारे टास्क को आप एक जगह पर असेंबल करोगे, राइट, दैट इज द आइडिया आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। अभी अगर आपका मतलब आपको, आप चाहते हो कि आपका ग्रुप या आपका क्लास दूसरे लोग उसे असेंबलिंग के लिए यूज करें, मतलब आपका ये क्लास दूसरे कहीं और असेंबलिंग के लिए मतलब यूज करना है उनको, टू क्रिएट अ बिगर टास्क, टू क्रिएट अ बिगर टास्क और अ फंक्शनल, if you want your code to be accessible to other classes create a bigger functionality और assembling के लिए आपका छोटा task है, so you have multiple tasks and you want this entire group to be reused at some other place, reuse मतलब उसको assemble कर सकते हैं to create a bigger functionality, आता clear है। तो when I say this is public, public का मतलब होता है this particular group is ready for other classes, they can use this class from anywhere within the application, so public is a keyword which means it is access specifier, access specifier means it tells that this particular class and its this particular class can be accessed or can be reused by some other classes, some other class, and inside that some other task. The public, it is a keyword using which we say that this particular group can be used by some other class anywhere within the application, मतलब आपका application में कहीं पर भी क्लास हो, कोई भी फाइल में हो, इसे भी आप उसे इस पर्टिकुलर क्लास को एक्सेस करते हो, सो यू डिक्लेयर दैट दिस पर्टिकुलर क्लास is public, means this class can be used by or can be accessed by anyone, or that is the meaning of public. Got the idea of public? What is public? The public is an access specifier or a reserved keyword which specifies that this particular class can be accessed anywhere within the, anyone can access this. Got the idea? Next word we have class. Next word we have class. So what is the class? Class is also again a keyword. Class is also again a keyword. What is the use of that class keyword? So when you say that this is a class, it means that whatever it is followed, it is nothing but a group of tasks. इसके लिखे बिना आप नहीं बोल सकते, लेट्स आप बोलते हो डॉक्टर, डॉक्टर के पहले आपको लिखना पड़ता है ना, डॉक्टर, इट इज अ डॉक्टर, आपने लेट्स से, मैंने यहाँ पर लिखा लेट्स से अदनान, so what is Adnan? Can you say that? You don't know anything. So if I write, let's say Mr. or let's say I write doctor. By looking at you understand this is doctor. So similarly, I want to say that what is this hello world? So I say class. So it is a, so by using this keyword, you say that this thing is nothing but a group of related tasks. What is that? This particular thing is nothing but a class. So class is a keyword using what? We create a group of related task. Related task. So we use class keyword to create a class or a group or a category. Simple. Now these keyword, after that we have these curly braces. These curly braces. So these curly braces are nothing but body of your class or the body of the container. The body of your
container where we can write multiple tasks. Again, I said there is a word called as public again. So what this public means, this particular task, can be used by some other places or some other classes, some other tasks to create a bigger functionality, assemble the tasks into that. So this particular task can be accessed anywhere in your application, within the class, within the task, any other task. So this particular task is accessible or it can be used by any other class, any other task within the application. मतलब आपके application में से आप कोई भी कहीं भी आप इसे use कर सकते हो. That is the meaning of public. Next we have static. Now what is static is also again a keyword. What is static? Static is also a keyword. Is having a some reserved meaning. Static का मतलब होता है does not. Static का मतलब क्या होता है? Does not change or it is common. Is kind of a common which is shared across some other entities. Example, let's say this particular class is shared by multiple students. Multiple students can use this classroom. So this is something static. This is something is not changing from one student to another student. So everyone has the same classroom. So all the students are able to share this particular classroom. तो स्टैटिक का मतलब होता है दिस पर्टिकुलर टास्क इज कॉमन फॉर ऑब्जेक्ट्स. दिस पर्टिकुलर कॉमन, दिस इज अ कॉमन टास्क. अभी के लिए इतना समझो, यू विल टॉक अबाउट द स्टैटिक कीवर्ड लेटर ऑन, बट अभी के लिए समझो कि दिस पर्टिकुलर टास्क इज कॉमन टास्क. दिस टास्क इज अ कॉमन टास्क. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? वी हैव void. Void means this particular function or a method or a task does not return any output, does not return any output after completion of the task. Void means nothing. Void means nothing. This particular task does not return. This void means this particular task does not return any output after completion. Then we have what is this main? Main is nothing but a name of the task, name of the method, name of the procedure, name of the task को आप multiple thing बोल सकते हो. What all things? Task is also called as method, function, also called as procedure, this also called as routine, this also called as implementation. ये सब word एक ही है. तो आप task को ही अलग अलग नाम, there are lot many things. Task is also called as method, function, procedure, routine, सबका मतलब एक ही. So what is this main? Main is nothing but a task. It is a task name given to a task. Then what is this? This is an input given to your main task. And what is the input? String args. R stands for arguments. String array वहां पर लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीपल. So multiple strings can be given input to this particular task. So what is string args? इसका मतलब है array of strings. Array of strings का मतलब होता है multiple strings can be given as an input to this particular. जैसे हम इंटीजर नंबर 1 नंबर 2 दिया था, वैसे इस पर्टिकुलर मेथड को हम मल्टीपल इनपुट्स दे सकते हैं. वी कैन गिव मल्टीपल वैल्यूज एज अ इनपुट. मल्टीपल स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग मतलब हेलो, गुड मॉर्निंग, ऐसे कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है जो हम इसे इनपुट दे सकते हैं. दैट इज द इनपुट टू योर मेन टास्क. Then this curly braces denotes the beginning and this curly braces denotes the end. This is the boundary of your task. So this is the boundary where we will write the statement. So your task has only one statement or only one line of step. Behind the scene there are a lot many things happening. For now just understand this is a single step. What is the step of, what is the instruction doing? This instruction prints hello on the hello world on the screen. This is the simple one liner task. Your task has only one line. What is that? Print hello on the screen. That's it. Your task is so small, it has only one line, that is called as print the hello on the screen. So system.out.println and you specify the input as hello world. लाइन का मतलब होता है प्रिंट द हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन. ये आपका इंस्ट्रक्शन है, एक ही लाइन है. अभी आप इसे भी हर एक स्टेटमेंट को आप एंड करते हो बाय सेमीकोलन. यू विल हैव मल्टीपल स्टेटमेंट्स. हाउ आर यू गोइंग टू सेपरेट द स्टेटमेंट्स? यू सेपरेट द स्टेटमेंट्स यूजिंग सेमीकोलन. अभी इसे भी आप और भी डीप में पढ़ेंगे. हमें इसे पढ़ने के लिए आपको और 15 दिन चाहिए. नीड मोर 15-20 days to understand this entire and the scene of this particular. You need around 20 days.
to understand this 20 to 25, maybe 1 month also you need to understand behind the theme, behind the scene of this particular thing. So this line is very much, lot of things are there to understand. अभी के लिए समझो, आई विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन बहुत सिंपल तरीके से. सिस्टम आप समझ सकते हो, सिस्टम क्या है, प्री डिफाइंड क्लास है. क्या है सिस्टम? जैसे आपने हेलो वर्ल्ड क्रिएट किया, हेलो वर्ल्ड इज अ क्लास, वैसे ही सिस्टम नाम का एक जावा ने ऑलरेडी क्लास बना के रखा है. जैसे आपने एक क्लास हेलो वर्ल्ड बनाया, राइट, तो वैसे जावा ने ऑलरेडी उसे ऐसे क्लास बना के रखा है. क्लास, पब्लिक क्लास बोल सकते हो, पब्लिक क्लास, और उसके अंदर बहुत सारे टास्क बना के रखे. वी हैव मल्टीपल टास्क, वी हैव मल्टीपल टास्क एंड डेटा. तो व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम इज अ प्री डिफाइंड क्लास. प्री डिफाइंड मतलब पहले से ही बना के रखा है. उसके अंदर आपको बहुत सारे टास्क ऑलरेडी मिले होंगे. तो पहले से क्यों क्लास बना के रखते हैं, पहले से क्यों टास्क बना के रखते हैं? सो दैट यू कैन रीयूज दैट, यू डोंट नीड टू राइट द टास्क वंस अगेन. ऐसे कुछ टास्क हो सकता है कि आपको पहले से रेडीमेड हो, बस आप उसे यूज कर सकते हो टू क्रिएट अ बिगर फंक्शन. देन आउट इज अ, अभी के लिए जस्ट लिसन, अभी आई डोंट नो वेदर यू विल अंडरस्टैंड दिस. आउट इज अ static reference variable, static reference variable which is present inside the system class. अभी के लिए ऐसे समझो कि out नाम का कुछ डेटा है, out नाम का क्या है, एक डेटा, वो कहाँ पर प्रेजेंट है, सिस्टम क्लास में. कहाँ पर प्रेजेंट है, सिस्टम क्लास में. ठीक है, ये डेटा समझो अभी के लिए. देन प्रिंट एल, प्रिंट एल का मतलब होता है प्रिंट लाइन. ये मेथड कहाँ पर प्रेजेंट है? दिस इज अ प्री डिफाइंड मेथड. क्या है? प्री डिफाइंड टास्क. जैसे हमने मेन मेथड लिखा है, जैसे हमारा मेन मेथड है, वैसे ही प्रिंट एल नाम का एक पहले से मेथड बना के रखा है किसी ने, वॉइड प्रिंट एल, ऐसे कुछ लोगों ने मेथड बना के रखी है. तो मेथड कहाँ पर लिखते हैं यूजुअली? वे डू वी राइट द मेथड? टास्क कहाँ पर लिखते हैं हम? वे डू वी राइट द टास्क इनसाइड द, टास्क कहाँ पर लिखते हो आप? where is this task written? Inside the class. So similarly this println is a task where it will be written, this task will be written inside a class. तो ये कौन से क्लास में लिखा है? प्रिंट स्ट्रीम नाम का, प्रिंट स्ट्रीम नाम का एक पहले से क्लास बना के रखा है. प्रिंट स्ट्रीम नाम का एक पहले से क्लास बना के रखा है, और उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर आपको ये मेथड. यहाँ तक क्लियर है? व्हाट इज दिस सिस्टम? सिस्टम इज अ प्री डिफाइंड क्लास which is defined by Java. Predefined मतलब पहले से defined. उसके बाद out is a reference variable or a data which is present inside the system class. Println is a predefined method. It is a predefined method or a task which is present inside the print stream class. अभी print stream भी Java ने पहले से एक क्लास बना के रखा है. तो print stream is also a predefined class. जैसे हमने हमारा hello world बनाया, वैसे जावा ने ऐसे 5000 से ज्यादा क्लासेस बना के रखी है प्री डिफाइंड. कितने? 5000 से ज्यादा. तो वन ऑफ दैट इज सिस्टम क्लास, प्रिंट स्ट्रीम क्लास, ऐसी बहुत सारी क्लास, राइट. तो वॉइड प्रिंट एलन, ये मेथड का काम क्या है, ये टास्क क्या करता है? सो दिस टास्क एक्सेप्ट्स इनपुट, और जो भी इनपुट आता है उसे बस प्रिंट करने का काम होता है. क्या करने का काम होता है इसका? स्क्रीन पर प्रिंट करने का. आप फिर से प्रिंट करने के लिए आप कोई लॉजिक तो नहीं लिखोगे. प्रिंट कैसे करना है ये लॉजिक ऑलरेडी किसने लिखा है? जावा ने. आप उस पर्टिकुलर लॉजिक का यूज कर रहे हो टू प्रिंट समथिंग. तो आप क्या कर रहे हो? ये लॉजिक पहले से जावा ने लिखा है, स्क्रीन पर कैसे प्रिंट करना है. दैट लॉजिक इज ऑलरेडी रिटन बाय जावा. तो आप बस उस लॉजिक का यूज कर रहे हो. क्या कर रहे हो आप? उस लॉजिक का यूज कर रहे हो, एंड यू आर जस्ट पासिंग इनपुट. तो आप क्या कर रहे हो? जो टास्क जावा ने बना के रखा है उसे क्या दे रहे हो? बस इनपुट, कि हेलो वर्ल्ड ले लो और ये प्रिंट करके दे दो. आप हेलो वर्ल्ड किसे इनपुट दे रहे हो? आप प्रिंट एलन मेथड को आप इनपुट. तो यू आर गिविंग दिस इनपुट टू द प्रिंट एलन मेथड. एंड वेयर इज प्रिंट एलन मेथड प्रेजेंट? प्रिंट एलन मेथड इज प्रेजेंट इनसाइड द प्रिंट स्ट्रीम class. It is written inside the print stream. Clear? Okay. Now I will just write whatever the things I have spoken. Okay, let's try to understand this.
So can you tell me what are the keywords are there in this particular program? Keywords कौन कौन से है? Keywords मतलब reserved words जिनको पहले से define किया. Public, class, public, static, बस इतनी. ऐसे कितने keywords है जावा में? Keywords are 53. कितने? 53. और प्री डिफाइंड क्लासेस हमारे पास बहुत ज़्यादा है. प्री डिफाइंड क्लासेस हमारे पास 5000 प्लस क्लास. यहाँ में प्री डिफाइंड क्लासेस, कैन यू टेल मी व्हाट आर द प्री डिफाइंड क्लासेस वी हैव? System is a predefined class. String is also predefined. String is also predefined class. और ऐसे बहुत ज़्यादा 5000 प्लस क्लास. How 5000 plus class? I will just try to write this. What is public? It is a reserved word, reserved or keyword or keyword which has predefined meaning. Yes, predefined. So what is the meaning associated with the public? So it is also called as, it is a access specifier. It is an access specifier. Access specify करना मतलब you are saying this is public means access specify करना मतलब this particular thing is available to use for every other places. So public means the classes now can be accessed from anywhere within the application. Perfect. Now similarly, what is class? ये सारे smalls हैं. What is class? What is class? So class is also keyword. Class is also reserved word or a keyword which has predefined meaning. So class means categorization or a group or a classification. That means categorization. So using this, what we do? Using class keyword, what we do? Using class keyword, we create a group of related task and task and what is the next word? We have hello world. What is that hello world? Is the name given to a class. Now what do we write inside this? This is just a name. This is just a. Then we have this curly braces. What this curly braces? It is the boundary of the class. Then we have again public static. We have public. This is already public. We have defined. What is static? It is also again keyword. It is a reserved or keyword which has predefined meaning. Static means does not change. Does not. Static means again is common. Means common. So this static method के पहले आपने जो लिखा है उसे बोला जाता है static method means common task. Static keyword we are going to see in very depth once we are starting with that. अभी के लिए. Then what we have void. Void is also
Also reserved. So what void means? Void means nothing. Void means nothing. So void का मतलब होता है void means method does not return the output. Then after that, what we have? Big static void main. What is main? It is the name given to a method, that is task. Is a name given to a method or a task, and it is the entry point. It is the entry point for the Java application. This is the first application. This is the first task. This is the first task that will be executed by whom? By JS. And what do we have? This thing, string args. So we write a string array of args. This is a input. Then input to the main method. What is this input? Multiple. This is the string ars is a array of string. This array of strings. That means it is Dalit. If you are not speaking, you can go on mute. Multiple. What means multiple strings can be provided as a input to the multiple strings can be provided as an input to the. Then again, what is this curly braces? This is the boundary of method. This is where we write the steps or statements completer. Then what is system? It is a predefined class. Okay. Now there are classes divided into multiple folders. The classes are also divided. These files are divided into multiple folders. So folders have the files. Inside the file we have the class. So this particular class is defined inside a folder or a package. Predefined class present inside the package. Package का नाम है java.lang. We'll talk about this package thing. अभी के लिए this. What is out? It is a static reference variable present inside the. For now, it's fine. You understand that's fine. Then we have println. What println is? It is a predefined method present inside the print. The predefined method present inside the print string class. And then we write semicolon. We separate the statements. Okay. That's it. Clear? So tomorrow again we'll just again quickly recap this. We'll try to understand. So there are lot many things we can learn about this. अभी ये तो बस day one था. This entire program, there are lot many. So what lot many things are? You should know what is class and object, what is static keyword. There are lot many things. Method concept is there, variable concept is there.
अभी बहुत सारी चीज़ है, मेथड क्या होता है, एरे क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर। अभी एक एक वर्ड इज जस्ट अ टॉपिक. Public is access specifier. So access specifier we have different topic. Class and object we have different topic. Then the public static. Static is also keyword, that is different topic. Then we have void. Void is nothing but this entire thing is a method. Entire thing is method. What is method? Why do we need method? What is variable? Why do we need variables? What is array? There are lot many. There are lot many things. इसको समझने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए. पूरा 100% आपको पूरा समझना है. It will take 3 to 4, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ है जो आप एक दिन में, क्योंकि एक एक वर्ड एक एक चैप्टर है. एक एक वर्ड इज काइंड ऑफ अ चैप्टर, सो यू विल अंडरस्टैंड. जैसे आप जैसे पूरा आपका अभी आगे आगे बढ़ोगे, यू विल इवेंचुअली अंडरस्टैंड. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको अभी डे वन पे ना समझे, सो डोंट वरी. अभी के लिए बस आग बंद करके सोचो कि वी आर राइटिंग प्रोग्राम टू कंप्लीट अ टास्क, एंड ईच टास्क विल हैव सम स्टेटमेंट. नाउ वी हैव रिटन वन स्टेटमेंट टू प्रिंट द हेलो ऑन द स्क्रीन. और ये टास्क हम एक क्लास के अंदर लिखते हैं. व्हाई डू वी राइट द टास्क इनसाइड द क्लास? टू लॉजिकली ग्रुप द. ये थोड़ा थोड़ा अभी में आएगा. ठीक है, चलो.